So continuing further, now we are trying to, we've done the insertions, variations of insert. Now let's try to delete. I want to delete a row, I want to delete a column. Let's first understand the basic format because the deletion happens with one function only. So that's very simple for us to do. That is drop function. सारे variations इसी के अंदर है. Okay? So whenever it is deleting a row or a column, full row and full column will be deleted. Okay? I'm not talking about partial. There's nothing called as partial deletion here. If I want to say कि father's name for सुष्मिता delete कर दो, तो आप सिर्फ एक डेटा को nan कर रहे हो. Okay? The whole record of Sushmita remains. What I'm talking about here is I want to delete the whole record of Sushmita. I want to delete the whole column marks or some other column for that matter. It can be multiple columns also. But I am talking about deleting the whole column and the whole row. Partial column deletion, partial row deletion नहीं होता. You may set some values to nan कि वो data अभी change हो गया है या whatever. It is not there. But you cannot really partially delete, half row delete किया, half column. वैसा कुछ story is not possible. Okay. So the function is drop. अब obviously when you want to drop something and I'm telling you कि पूरा row और पूरा column delete होगा, so you have to tell him कि which rows and which columns to delete, right? So we go by the reference of the labels here, index labels or the name of the rows. यहाँ पे तो name of the rows is like the indexes for the row and the name of the columns for to refer to the column names. Correct? So drop में हम लोग either उसको बोलेंगे कि ये सारे rows delete कर दो 112, 113, 114, whatever, or single row, or I'll give the column. So you cannot really combine. You cannot say कि 112 and names delete कर दो. That you can't do. So in one go, you may delete multiple rows, no problem. Or you may delete multiple columns, no problem. But you cannot combine. कि एक ही command में मैंने row भी delete कर दिया और column भी delete कर दिया. That is not possible. ठीक है? So either you give the row labels or you give the column labels. Single or multiple, whatever. If it is single, the square brackets is not essential. If it is multiple, obviously we work with list always to refer to multiple values in Python. So square bracket becomes compulsory. कि मुझे जब multiple नाम देना है कि section, father's name and marks, तीनों columns delete करना है मुझे. So it has to be enclosed in square brackets and the names will have the quotes. Indexes जो मेरा row का index है, that is a number. I have not put quotes when I created them. So while deleting also I will not put the quotes. To refer also I will not put the quotes ever because they are numbers for him. Okay. The column names are names, string values. So I have to put the quotes whenever I'm referring to them. Okay. Then comes the axis. So when you give him the names, whether row or column, you have to tell him कि इसको जाके कहाँ ढूंढो, row में ढूंढो या column में ढूंढो. Okay. So there comes the second argument, which is axis. Axis can be either 0 or 1. If it is 0, he knows that you're talking about the rows. Okay, 0 row. ऐसे याद रखना. 0 row. Majority times in pandas, your axis 0 refers to rows only. ठीक है? So row is 0. Axis. Correct? And that is default also. तो अगर आप axis नहीं दोगे, so whatever names you have given in the labels, he will go and search it in the rows itself. If you give it as 1, then he will go and search it in the column names. ये वाला जो भी column है, मुझे उसको delete करना है. ठीक है? Second thing. Third thing is it can be a permanent deletion, it can be a non-permanent deletion. Okay? So if you say by default it is a non-permanent deletion. आपने सिर्फ लिखा भाई df.drop square bracket half circle के अंदर you wrote 115. So 115 is 0, axis 0, that is row. So I don't even give the axis. You just wrote this much, right? So he'll give you the output by deleting that row and the rest of the data. So let me show you that thing. Immediate output आता है इस command का, ठीक है? So if I kind of do this, इतना करने के बाद now I talk of deleting df. Okay, the print, let the print come. df.drop and I'm saying 112 को delete कर दो. श्री राम का data delete कर दो. So 112, just 112, this much I wrote. So by default axis 0 हो गया. 0 means वो row को refer करेगा. Row में ही मेरे 112 index है, तो वो उसको delete कर देगा. But नॉन परमानेंट डिलीशन. नॉन परमानेंट डिलीशन में क्या होता है कि आउटपुट आता है, राइट? जब आउटपुट आएगा तो इसको चाहिए प्रिंट. अगर मैं प्रिंट नहीं दूंगी तो वो कोई आउटपुट नहीं देगा मुझे.
और मुझे पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ, क्योंकि आफ्टर दिस व्हेन आई से प्रिंट डीएफ, माय डेटा विल बी अवेलेबल, क्योंकि ये नॉन परमानेंट डिलीशन है। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू रेफर टू द डेटा फ्रेम, डेटा इज एग्जिस्टिंग। उसे सिर्फ उस रेफरेंस के लिए, उस कमांड के लिए जब आपको आउटपुट दिया, इट टेल्स यू कि आफ्टर डिलीटिंग दिस इज हाउ योर डेटा विल लुक लाइक। इसीलिए इस कमांड में प्रिंट देना कंपलसरी है। ये चीज कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है, वी आर नॉट एबल टू रिमेंबर दैट। एंड आपको लगता है मैम मैं डिलीट कर रही हूँ, डिलीट नहीं हो रहा। वो डिलीट हो चुका है और आउटपुट नहीं आया उसका, बिकॉज यू डिड नॉट गिव द प्रिंट कमांड। ठीक है। सो यहाँ पे ही विल शो यू द डिलीशन, द डेटा पोस्ट डिलीशन, and then here he will show you the data, current status of the data, which will again have that data, क्योंकि मैंने यहाँ पे in place true नहीं किया। when I want a permanent deletion I have to make it in place true, so let's do that and see what's my final output. So a lot of things are done and then we get the output. अब देखो ये वाला जो मेरा print है, so I've got how many prints here? एक ये वाला print df है, if I kind of change it to comment, so I will not get this, I'll get this, which is like after all my insertions and things, then drop करने के बाद और एक ये वाला, ये तीन करके देखते हैं। So this is after all my insertion of row and column, ठीक है। This is after deleting 112, so you can see ये 112 यहाँ पे था, यहाँ पे 112 नहीं है, and then later when I'm again printing df 112 is there. So permanently उसने delete नहीं किया, just reference के लिए आपको दिखा दिया कि yes I have deleted, and post deletion it will look like this. So, इसमें प्रिंट देना जरूरी है व्हेन योर बाय डिफॉल्ट, व्हेन योर डिलीशन इज नॉन परमानेंट, अदरवाइज आउटपुट नहीं आएगा। लाइक इफ आई काइंड ऑफ show you my apprehension what I'm talking about, because this happens too much with class 12। मैम वो डिलीट नहीं कर रहा है, मैम वो डिलीट नहीं कर रहा है, वो डिलीट बेचारा कर चुका होता है, दिखाता नहीं है। ठीक है। सो दिस ऑल्सो हैज 112, दिस ऑल्सो हैज 112, तो आप बोलोगे डिलीट नहीं किया, राइट। सो when you do a non-permanent deletion, do not forget to put the print statement. Correct? Now, if you want to make it a permanent deletion, do not put the print statement, otherwise it will give you none. Because permanent deletion में there is no output which comes. He goes, deletes it and keeps it there. Doesn't come with any output. So permanent deletion में, now I'm going to show you with permanent deletion also, no print is required. ठीक है, कर दिया। उसके बाद आपको डेफिनेटली प्रिंट डीएफ करना ही पड़ेगा टू सी व्हाट हैज हैपेंड, एंड देयर इट विल शो यू दैट द डेटा इज मिसिंग। In place is equal to true, true, false are Boolean values. So capital T and capital F, don't forget that. Let's do this. So now permanently from DF at this position, my 112 record is deleted. Yeah. अब 112 लिखा, गलती से access 1 लिख दिया तो वो बोलेगा index not count. So that's a problem. So be sure whether you're deleting a row or whether you're deleting a column, and accordingly you have to either mention it. If it's a column, of course, it's compulsory. So it gives a key error, not found in the access. So आपने बोला access 1, तो वो column में ढूंढा, column में उसको 112 नहीं मिला, as usual. Simple. ठीक है? You have to be particular about that. So please try one deletion, permanent, non-permanent, for a row or a column, whichever you feel like. I am waiting till you do it. And then when you say that, yes, I'm done, we'll continue further with the extracting.
Is it done? Doing it, ma'am. Okay. Some issue? Ma'am, it's done. Okay, great. Aisha, done? Yes, ma'am. चलो, good. श्रीराम हो गया? Yes, ma'am. चलो, great. Now let's move on to the label indexing. Label indexing means now using these square brackets and LOC, how do I extract my data? I want to see father's name of Naisha. I want to see project remarks of part. Okay, so how do I extract data? That's also a purpose, no? So just to introduce, as I said, there are three indexes, square brackets, dot .loc and iloc. Again, this has been done in the previous class. I'm just going to do it practically now. And as we have referred also, abhi I said square brackets को majorly use करो जब columns refer करने, single column or multiple column. But इसमें अगर हम slicing use करते हैं, if you see these three examples, इसमें अगर हम slice वाला concept use करेंगे, जो हमने list में use किया, जो हमने series में use किया, जो हमने data frame में भी use करेंगे अभी, I can refer to rows. थोड़ा सा peculiar है, याद रखना ये चीज. So slicing जब करना, again this becomes the easiest. I can use it with LOC also, no problem. But सिर्फ rows का slice मुझे देना है, reference करना है. This is the smallest code then. ठीक है? It can refer to the rows. But otherwise, if I try to give row indexes here with the square brackets directly, it will not work. So आप ऐसे याद रखो, square brackets indexer to be used for column referencing, LOC to be used for row referencing as well as column referencing. So LOC is actually the most flexible one. ठीक है, लेकिन सिर्फ कॉलम का नाम देना तो एलओसी में ज्यादा लिखना पड़ेगा. क्यों बता रही हूँ मैं वो चीज, अभी करके दिखाऊंगी तो आपको यूल रियलाइज की क्या प्रॉब्लम हो रहा है. राइट. सेकंड, all the LOC variations I have given here in the PPT, that's there also, and all the examples individual reference के लिए. ILOC, same story, absolutely same formats, but the only thing is you will use all 0, 1, 2, 3, 4 वाला reference, whether slice, whether direct, all 0, 1, 2 reference. Whereas in this you will see it's all the column names or row indexes like that. ठीक है, इस पूरे को भी if you practice after creating the data frame which is there on the screen for reference, अच्छे से LOC और ILOC रिवाइज हो जाएगा. ठीक है, मैं अभी एक बेस एग्जांपल लेके करा देती हूँ in this particular one. Okay, so I am kind of removing the drop. I keep it till here and we run it once to have, so run we'll do later. So this is my data which is ready. Now I want to refer. Okay. For referring, let me first talk about column reference. I want, so my data has name, marks, it has got class, section, project, and father, right? So when I want to refer to a single column, simple print के साथ, I'll say df square bracket and in the quotes name. Names. यहाँ पे you have to be particular about what column name, exact column name is given. And if you kind of see this, didn't I insert my column data इसी तरीके से column को refer करते हुए, right?
सो सेम रेफरेंसिंग टेक्निक, तो यू रिमेंबर कॉलम जब रेफर करना है, ये इजीएस्ट तरीका है करने का. अगेन मल्टीपल मेथड्स आर देयर, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द वन विच इज द easiest to remember. Okay, so it will only give me the names column, right? When you want to talk about multiple columns, you have to increase one more square bracket. Okay, so let's move on to the next print statement. I'll show the output in one go. प्रिंट डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया, क्लोज कर दिया. ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है, पहला स्क्वायर ब्रैकेट विच आई एम पुटिंग हियर, दैट इज द इंडेक्सर वाला स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है. नाउ आई हैव टू टेल हिम multiple column names, so that's like a list of column values. Every time in Python multiple values means a list. इसके अलावा हम दे ही नहीं सकते, वो लेगा ही नहीं, right? So another set of square brackets, maybe 100 names are there, no problem, 100 field names. बट एक ही स्क्वायर ब्रैकेट. इट्स नॉट दैट कि दो के लिए दो लगेगा, एक आई मीन एक्स्ट्रा एक लगेगा, तीन कॉलम के लिए एक और लगेगा, नथिंग लाइक दैट, एक ही एक्स्ट्रा लगेगा. ओके, सो हियर आई पुट नेम्स आई वांट एंड किसी भी सीक्वेंस में वी कैन पिक अप द कॉलम, सो नो प्रॉब्लम. सो लेट मी टेक प्रोजेक्ट and marks. Okay, so the outer one is your indexer वाला square, inner one is the list वाला square. ठीक है. And it is going to give me the entire row information for those three columns. Let's execute and see. So this is my complete DF, जो कि दिख रहा है यहाँ पे इसकी वजह से. And then the two references of my column references. This is only for names. इतना ठीक है. Do you notice one thing, जब हम एक कॉलम का रेफरेंस दे रहे हैं तो कॉलम हेडिंग भी नहीं आ रहा, वो ऐसे आता है नीचे सिंगल के लिए. ठीक है. बट व्हेन यू आर गिविंग मल्टीपल, तो इट इज कमिंग लाइक प्रॉपर, दैट यू फील दैट ओके डेटा फ्रेम का पोर्शन आया. नेम्स, प्रोजेक्ट एंड मार्क्स. ओके, नाउ व्हाट आर द वेरिएशंस आई कैन डू. I said with the column indexer, I can give slice. Okay, so I am wanting, मैं इसको delete कर दिया, otherwise confusion होगा necessarily. Delete and putting it like this so that I can share this data with you later. So df indexer square bracket, print का closure, and index slice के लिए कभी भी extra square नहीं चाहिए. I'm repeating again. लिस्ट ऑफ वैल्यूज के लिए एक्स्ट्रा स्क्वायर चाहिए, स्लाइस के लिए एक्स्ट्रा स्क्वायर ब्रैकेट नहीं चाहिए. ओके, स्लाइस का फॉर्मेट इज जस्ट लाइक योर रेंज फॉर्मेट विद कोलन. स्टार्ट कहां से करना है, स्टॉप कहां पे जाके करना है, एंड स्टेप वैल्यू क्या है. रेंज एवरीबडी कैन रेफर, नाइशा आल्सो, पार्थ आल्सो. रेंज विच वी यूज विद फॉर आई इन रेंज ब्रैकेट्स में वी गिव 2, 10, 2, है ना. सो सेम थिंग, बट रेंज में हम कॉमा लगाते हैं, यहाँ पे हम कोलन लगाते हैं. स्लाइस में हमेशा कोलन लगाते हैं फॉर एवरीथिंग. So now I'm telling him, start my rows for, like if I give it like this, what will it do? Start from the beginning, go till the end, but jump by 2. मतलब एक एक छोड़ छोड़ के दिखाओ. That's the meaning of this. So, okay. Otherwise, I can do it as start from the first record, not the 0th record, first record, go till the third one. Another example I'm just showing you. And in the slice, if you are giving third, it does 1 less. जैसे रेंज में करता है. रेंज में अगर मैंने 2 to 10 दिया तो वो 2 to 9 तक चलेगा. सिमिलरली यहाँ पे 1 to 2 तक चलेगा. सो 1 and 2 दो रिकॉर्ड दिखेंगे सर. ठीक है, लेट्स सी दैट. So this is my whole data. 0th row, first row, second row, third row, fourth row.
आई सेड एवरी ऑल्टरनेट रिकॉर्ड, सो हर्षिता पहला आया, फिर एक छोड़ के नायशा, फिर एक छोड़ के सुष्मिता. तो हर्षिता, नायशा, सुष्मिता इज द आउटपुट फॉर द फर्स्ट वन. एंड द सेकंड वन इज 1 से 3 तक. सो 1 से लेके 2 तक, 1 and 2. दैट्स इट. सो 1 इज ये 0 है, ये वाला हर्षिता वाला 0 ही रिकॉर्ड है. श्रीराम इज 1, सो श्रीराम आ गया. ओके. एंड द नेक्स्ट वन इज नायशा 2, जिसका 2 है इंडेक्स वैल्यू. एंड दिस इज इट. ओके. नाउ आई मस्ट गेट अ क्वेश्चन दैट मैम, आप सडनली स्विच ओवर हो गए टू व्हाट, टू डिफॉल्ट इंडेक्सेस. व्हाई नॉट आई से कि मुझे 101 से 111 से 117 तक चाहिए. विल दैट वर्क विथ स्क्वायर रेफरेंस? ओके, लेट्स ट्राई दैट. df, I am saying suppose start from Harshita, सॉरी, हाँ चलो ठीक है, मुझे तो बेसिकली प्रॉब्लम ही दिखानी है. हर्षिता टू नायशा. If it is working with indexes, default indexes, sorry, Harshita and Aisha is not indexes. I have to use 112 वाला. वो क्या है? 111 to 113. If I give like that, 111 to 113, 113. ठीक है. Empty. क्यों? Because when you use proper index labels here, it is going and searching in the column. Can you see the this thing? It says columns are these. मुझे इसमें वो इंडेक्स मिला ही नहीं जो तुम दे रहे हो. ठीक है. So I again come back to my story that when you want to use square brackets reference, square bracket indexer, just use it to refer columns, column names जहां पे देना है directly, और row slicing, column index and row slicing. कॉलम इंडेक्स का भी जो लेबल, जो यूजर ने लेबल दिया है एक्चुअली, राइट. डू नॉट गो फॉर एनीथिंग एल्स, इट विल नॉट वर्क. बट देन फिर ये कैसे काम करेगा? अब मुझे चाहिए, मुझे 111 से 113 तक चाहिए. व्हाट डू आई डू? आई गो फॉर द नेक्स्ट indexer, that is dot loc. loc allows me कि तुम रो इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स किसी को भी यूज करो. ठीक है. एलओसी में हमने ये चीज बोला कि 111 से 113 को मुझे डिस्प्ले करो. एंड देयर इज वन मोर पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड. इफ आई एम यूजिंग यूजर डिफाइंड लेबल इंडेक्स, जो कि इस केस में है, आई एम नॉट यूजिंग 0 1 2 3 को, डिफॉल्ट नहीं यूज करें, तो अपर लिमिट को इंक्लूड करता है. गॉड नोज व्हाई दे हैव गिवन दिस लॉजिक, बट दैट इज हाउ इट वर्क्स. बट विथ डिफॉल्ट इंडेक्सेस, अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड. So if I say 0 to 0 colon 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 5, 0 to 4 आएगा. But if I say 111 to 115, suppose that's how my indexes are labeled, तो 115 will be included while extracting in the slice. Okay. So LOC में जब हम use करेंगे, my actual row labels can be used. Otherwise, when you use it with the square label, square bracket indexer, do not go for the label indexes. ठीक है. रादर ये वाला भी नहीं यूज करना है, मत यूज करो, कंफ्यूजन हो गया अननेसेसरी. सिर्फ कॉलम को रेफर करने के लिए गो फॉर स्क्वायर ब्रैकेट्स, बाकी सब चीजों के लिए एलओसी को यूज करो अगर इन डिफॉल्ट इंडेक्स नहीं यूज करना. और अगर डिफॉल्ट इंडेक्स यूज करना तो आईएलओसी. सिंपल. दैट विल मेक थिंग्स इजियर. नाउ सी द आउटपुट हैज कम. हर्षिता से लेके नायशा तीनों को इंक्लूड किया, आई मीन नायशा को भी इंक्लूड किया. यही चीज अगर मैं बोलूं आई एलओसी, तो मुझे इंडेक्स देना है ना. 111 का डिफॉल्ट इंडेक्स है 0, राइट. एंड 113 का डिफॉल्ट इंडेक्स विल बी 0 1 2 2. सो आई एम आस्किंग हिम 0 to 2 वाला डेटा दिखाओ मुझे. बाय डिफॉल्ट 0 ओनली, स्टार्टिंग नहीं दिया तो 0, अदरवाइज आप दोगे तो भी 0.
इस केस में वो थर्ड वाला डेटा, दैट इज द सेकंड जिसका इंडेक्स है, वो नहीं दिखाएगा। दैट्स अ रूल। सुष्मिता मैम हैव नॉट डन एनीथिंग विद दैट। ठीक है, ये देखो इसके अंदर हर्षिता और श्रीराम आया, द थर्ड रिकॉर्ड हैज नॉट कम। निशा, फाइन। अगर थर्ड चाहिए तो यू विल हैव टू गिव 3। तो 0 1 2 3 आपने 4 का रेफरेंस दिया एक्चुअली, बट बिकॉज डिफॉल्ट इंडेक्सेस इट गोज 1 लेस। सो 0 1 2 ऑल द 3 रिकॉर्ड्स विल बी शोन। दैट्स अबाउट स्लाइस। डायरेक्ट देना है, let me give now the direct references. df dot loc, I want 1 1 1 वाला डेटा। ठीक है, print df dot loc, loc का अपना स्क्वायर ब्रैकेट, ये loc का अपना स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल रेफरेंस के लिए भी यूज हो रहा है, loc का अपना स्क्वायर ब्रैकेट है और उसके अंदर लिस्ट ऑफ वैल्यूज आई एम गिविंग। तो another set of square brackets, I want 1 1 3 का डेटा with 1 1 2 का डेटा, इसे एक स्क्वायर ब्रैकेट एक्स्ट्रा। अच्छा, सेम आई वांट फॉर माय, आई वांटेड विथ माय दिस थिंग डिफॉल्ट इंडेक्सेस। स्लाइस नहीं चाहिए, आई एम गिविंग एग्जैक्ट इंडेक्सेस को। डॉट एलओसी आई एलओसी, सॉरी, एलओसी आई एलओसी इज एब्सोल्युटली सेम। सिर्फ एलओसी में यू विल गिव द यूजर डिफाइंड लेबल्स वेदर फॉर रो वेदर फॉर कॉलम, एंड इन आई एलओसी यू विल गिव द डिफॉल्ट। चाहे आप स्लाइस कर रहे हो चाहे आप एग्जैक्ट उठा रहे हो, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है इसके फॉर्मेट में। आई एलओसी का अपना स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर सिंगल उठाना है, सपोज मुझे थर्ड वाला रो चाहिए, 0 1 2 3। सो हर्षिता श्रीराम नायशा पाथ, पाथ का डेटा आना चाहिए। एंड अगर मैंने बोला df डॉट आई एल ओ सी, मुझे पाथ और सुष्मिता का डेटा चाहिए। सो पाथ इज आई थिंक 3 एंड सुष्मिता इज 4। फाइन, लेट्स सी ऑल दीज आउटपुट्स। एंड मैं ऊपर वाला अगेन ना मेकिंग कमेंट सो दैट कंफ्यूजन ना हो, ये वाला नहीं एग्जीक्यूट होगा। ILOC भी I had shown you, I think, yeah. 2 LOC and 2 ILOC. No slice, exact values I'm giving. Execute this. Okay, where you are extracting a single value, तो वो कॉलमिनर फॉर्मेट में आता है। लाइक हर्षिता का डेटा जो मैंने 1 1 1 यहाँ उठाया, हर्षिता का डेटा इस तरीके से आएगा, बिकॉज सिंगल है तो उसको एक लाइन में ना देके ऐसे कॉलम फॉर्मेट में देता है, लेबल की तरह। जैसे हम लेबल प्रिंट करते हैं ना, स्क्वायर, एक स्क्वायर इसके तरह आउटपुट की तरह। When the moment is more than one, let's go to give you like this normal format of data frame. ठीक है, 1 1 2 1 1 3 एग्जैक्ट दो वैल्यू, ये सिर्फ एग्जैक्ट 1 1 1 वाला वैल्यू। जब ILOC से करा तो सेम चीज, इट केम फॉर द थर्ड वन, 0 1 2 3 पाथ, एंड पाथ का ही पाथ एंड सुष्मिता का रिकॉर्ड। सो ILOC एनओसी का फॉर्मेट एब्सोल्युटली सेम है, सिर्फ कंटेंट वेरिएशन है। एक में रो लेबल आएगा, आई मीन इसमें यूजर लेबल आएगा, एक में डिफॉल्ट इंडेक्स आएगा। ठीक है, वन लास्ट थिंग, आई गॉट 8 मिनट्स विद मी टू फिनिश ऑफ। एलओसी में इफ आई वांट टू नाउ स्पेसिफाई रो एंड कॉलम एज आई सेड, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज गिविंग मी ऑल द कॉलम्स, कैन यू सी दैट, नेम ऑल्सो, फादर ऑल्सो, मार्क्स ऑल्सो, क्लास ऑल्सो, सेक्शन ऑल्सो। अब मुझे बताना है कि मुझे पार्ट एंड सुष्मिता का क्लास एंड सेक्शन चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। ठीक है, so I'm doing the variation here itself. Notice it now. So LOC के अंदर, LOC के अपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, LOC allows you, जैसे हम लोग ग्राफ में रो कॉलम 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 का वैल्यू देते हैं ना, x कॉमा वाई। ठीक है, सिमिलरली LOC में याद रखो रो कॉमा कॉलम स्पेसिफिकेशन। That's why I said LOC is the most flexible one. So 1 1 1 का मुझे क्या चाहिए, मार्क्स, नो एक्स्ट्रा स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इलेबोरेट करके बताती हूँ। देखो, प्रिंट का ओपनिंग क्लोजिंग, राइट, देन एलओसी का स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग, करेक्ट, बीच में कॉमा। ठीक है, सो एलओसी के अंदर रो का स्पेसिफिकेशन, कॉलम का स्पेसिफिकेशन दे दिया।
Now, if the column specification or the row specification is more than one, जो कि हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में करेंगे, वहां पे मुझे फिर लिस्ट ऐड करना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे इट इज ओनली सिंगल रो का सिंगल डेटा, मुझे 1 1 1 का ओनली, okay, let me not disturb this so that when you refer you can refer to it properly. मैं इसको ऐसे छोड़ के नेक्स्ट लाइन में I'm doing just a second. Okay, let me come here and do it using LOC for both row and column specifications, right? इसको कहते हैं हम प्रिंट df का अपना स्क्वायर ब्रैकेट और प्रिंट का इसको ना ऐसे तोड़ लाइक व्हेन यू डू इट इन द पेपर आल्सो, ऐसा तो इट्स नॉट गोइंग टू कम इन द थ्योरी एग्जाम, इट्स ओनली फॉर द प्रैक्टिकल एग्जाम। सो देते जाओ, लाइक ओपन द ब्रैकेट, क्लोज द ब्रैकेट आल्सो साइमल्टेनियसली, सो छूटेगा नहीं, ठीक है। नाउ डीएफ के अंदर आई विल फर्स्ट गिव द रो स्पेसिफिकेशन देन द कॉलम स्पेसिफिकेशन, सो कॉमा डालो, कॉमा के लेफ्ट में रो, कॉमा के राइट में कॉलम। रो क्या चाहिए, 1 1 1, उसका कौन सा कॉलम चाहिए, सपोज मार्क्स, 1 1 1 का मार्क्स चाहिए, right? And again I'm making all these in comments so that you just get that output, avoid any confusion. One print of the entire data frame and this, ठीक है। 1 1 1 का मार्क्स चाहिए, okay. Next print is df square bracket with a comma. अच्छा, marks is sorry a string, so it has to be in quotes. Now I want 1 1 1 comma 1 1 2 दोनों का मार्क्स चाहिए, लेकिन ये तो मल्टीपल वैल्यूज हो गए, तो मल्टीपल वैल्यूज हो गए तो स्क्वायर ब्रैकेट देना जरूरी है। आई नो इट्स गेटिंग कंफ्यूजिंग, प्लीज इसको तोड़ तोड़ के करना, पूरा पहले एक ही ब्रैकेट बिठाया, फिर कॉमा बिठाया, फिर कॉमा के लेफ्ट साइड में आए, उसके लिए लिस्ट ऑफ रो नेम्स दिए, फिर कॉलम में गए, कॉलम पे इफ इट्स मोर देन वन आई विल गिव अ सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स, सिंगल के लिए भी दे सकते हैं बट देन दैट्स नॉट एसेंशियल, राइट। सो फॉर 1 1 1 एंड 1 1 2 मार्क्स दिखाओ, करेक्ट। नाउ द थर्ड वेरिएशन, डीएफ का ओपनिंग क्लोजिंग, बीच में कॉमा, फॉर रो मल्टीपल रोज 1 1 1 कॉमा 1 1 3 कर देते हैं इसको, एंड नाउ कॉमा के बाद another set of square brackets for the columns. Let me have marks and let me have class and let me have section, ठीक है। Oh, in all the three cases I forgot to write LC, तो वो सब गलत हो जाएगा, dot LC. ILOC करेंगे तो 1 1 का इंडेक्स क्या है, 1 1 1 का मार्क्स का इंडेक्स क्या है, इधर भी दोनों इंडेक्सेस, मार्क्स का इंडेक्स, दोनों इंडेक्सेस, तीनों कॉलम्स का इंडेक्स, ठीक है। सेम, एब्सोल्युटली सेम, सिर्फ एक्चुअल लेबल्स की तरह इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। लेट्स सी दिस आउटपुट विद व्हिच आई फिनिश for today, otherwise it will become too much for you to digest, right? This 56 is for 1 1 का मार्क्स, लेट्स चेक दैट, 1 1 1 का मार्क्स कितना है, 56, तो दिस इज सिंगल आउटपुट, देखो कोई हेडिंग नहीं देता वो, ठीक है। सिंगल जब भी है वो हेडिंग नहीं दे रहा है ना। मार्क्स इन द सेकंड प्रिंट ऑल्सो आई एम आस्किंग 1 1 1 एंड 1 1 2 का मार्क्स, 1 1 1 एंड 1 1 2 का मार्क्स हैज कम, मार्क्स का हेडिंग नहीं दिया। 1 1 1 1 1 3 का मार्क्स क्लास एंड सेक्शन, 1 1 1 1 1 3 का मार्क्स क्लास एंड सेक्शन। आई नो थोड़ा ज्यादा हो गया, आई अंडरस्टैंड, राइट, बट देन now I have given you this much, you just have to practice it a little, okay? We won't go any further into this, itna I will keep for our indexing and insertion deletions, that much is enough, okay?
So you'll try with iloc, you'll try with more variations, but format याद रखना, रो कॉमा कॉलम विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स. रो का अपना स्क्वायर सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स अगर मल्टीपल है, कॉलम का अपना सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स अगर मल्टीपल है. इसको थोड़ा एनालिटिकली एनालाइज करके करोगे तो फॉर्मेट में गलती नहीं होगा. ओके, बिकॉज मशीन में तो हम बीच में कर सकते हैं इंसर्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो जिस तरीके से मैंने बोला वैसे करो. प्रिंट का अपना हाफ सर्कल ओपनिंग क्लोजिंग, फिर एलओसी का अपना स्क्वायर, फिर कॉमा डाल दो बीच में, फिर कॉमा के लेफ्ट में आओ, रो के स्पेसिफिकेशन डालो, कॉमा के राइट में जाओ, कॉलम के स्पेसिफिकेशन डालो. अगर दोनों रो एंड कॉलम स्पेसिफिकेशन में सिंगल सिंगल वैल्यू है, नो एक्स्ट्रा स्क्वायर ब्रैकेट्स रिक्वायर्ड. अगर रो में भी स्क्वायर, आई मीन मल्टीपल रोज के लिए आप चाहते हो एंड कॉलम में भी आप मल्टीपल कॉलम्स के लिए चाहते हो, एक्स्ट्रा सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स हैव टू बी पुट. Do I make sense? Please show me a thumbs up that you are alive and not sleeping. Thank you, Harshita. What about others? I know it's an overdose. I know it's an overdose, Sriram. Don't cry. थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, हो जाएगा. मैं और नहीं कराऊंगी. आई विल नॉट डू एक्स्ट्रा ऑफ दिस. इसके बाद हम सीधा मूव करेंगे टू द ग्राफ्स. ग्राफ्स इज इजी, इसमें इतना वेरिएशन नहीं है. ये रेफरेंस में है थोड़ा सा, बहुत सारा है. स्लाइस कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, समझ के करोगे तो हो जाएगा. नायशा, नो रिएक्शन, नाइदर क्राइंग नॉर हैप्पी नॉर थम्स अप. डोंट डू दिस बेटा. एटलीस्ट गिव मी सम रिएक्शन. Okay, so I'll close today. This Saturday we have some official duties, so I will not be able to have my class on Saturday morning. Ma'am, is it for the robotics event? No, we have to go out of school. Teachers have to Oh, go out of school for some work. I'm a volunteer for the robotics events that's happening this Saturday in school. Okay, so you'll be doing with that. We are going out of school for some other Oh, yes. work. Okay. Mm. Okay. Fine. So let's see when we can meet next. Whenever you have time, please come to the lab. Okay. Assembly time permission I'll take. I'll keep you informed. Until unless you get my information, don't come. Okay. Because something or the other is there in the assembly, then ma'am doesn't allow. I'll keep you informed. If I inform you, then come. Okay? Yes. Ma'am, tomorrow you'll be in the assembly, right? Yeah, tomorrow I am asking you to come in the assembly time. I will take permission from ma'am. No, ma'am, tomorrow I can't. Tomorrow